Okay, so students, today we will discuss the array and the pointers. That means the interaction of the array with the pointers. So in this, let me introduce you with the basic terms related with the array and pointers. So when we declare some array, then always the array name itself represents the base address of the array. And whenever we talk about the address, it means the pointer. So if we have an array named AR, and let's say as given in the second point of this slide, ARI, which is some array whose name is AR and I is the subscript. That means the size related with the elements of the array. So this array ARI can be represented in the following four forms. Firstly, the array AI as usual, which can be represented as star AR plus I, or interchangeably the AR plus I can be interchanged like this, I plus AR, and finally it can be represented as IAR. So all these four terms refer to the same thing. An array with name AR and I as usual is the subscript. So for an instance, if let's say some array is having the 5 elements of any type, we are not bothering over here the type of the array. So if some array AR5 is there, then obviously, as I told you, the name of array AR, it denotes the base address of the array. So base address simply means the starting address. As in this array AR5, this is the array of 5 elements. So if 5 elements are of type integer, then obviously this array of 5 elements will be having 5 elements, and as if we consider this array as the array of integer, so 10 bytes will be used by this array. So out of these 10 bytes, each element will be requiring 2 bytes as it is the size of the integer. So AR, the name of the array, represents the starting address, the address of the element AR0. So alternatively, the address of the starting element AR0 is represented as usual by putting an ampersand symbol before the element variable name ampersand AR0. So in this sense, AR and ampersand AR0 both are referring to the same thing, which is the base address of the array AR5. So conclusion is that the array name or the address, that means first element with the ampersand sign, both are referring to the base address of the array. So अब अगर हमारा AR, that means array name, base address है, this means it is a fixed or constant quantity which cannot be changed. So if we try to do these kind of operations, AR plus plus or minus minus AR, etc., or any arithmetic operations which try to change
the value of AR, that means which is basically a address, so which cannot be modified. If we try to do such kind of any operations, that means any arithmetic operations or any operation which try to change the meaning, that means the constant value of this address, which cannot be permissible. Now, as I told you, the array storage. So any array, all the elements of that array are stored inside the memory contiguously. That means all the elements are stored one after the another in a contiguous fashion. Continuous addresses will be assigned. So, for example, if any array of 5 element is there, so starting element will be taking the number of bytes depending on the type of the array. So if it is the integer array of 5 elements, then it will take the 10 bytes. And these 10 bytes will be contiguous. That means all the 5 elements will be continuously stored. So this is an important property of the array. And by using this property, we can access all the elements of the array, and we can uh, access the addresses of each and every element if we know the base address of the array. तो अगर हमें array के base address का मालूम है, यानी first element का address मालूम है, तो हम array के सारे element के addresses find कर सकते हैं. और अगर हमें addresses मालूम है, तो हम pointers के previous discussion से जानते हैं if we can find or evaluate the value at an address. So by knowing the base address of the array, any array, we can access and print all the elements as well as all the addresses corresponding to all the elements of the array. So let's say हम एक array of type integer consider कर रहे हैं, तो अगर इंटीजर एरे है तो हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से 2 एड्रेसेस आगे स्टोर हो रहा होगा. तो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस एरे गिवन इन दिस डायग्राम. सो इफ एन एरे ऑफ 5 element is there, so let's say value of these elements are 10, 20, 30, 40, 50. And as usual, if array name is ARRI, so each of the 5 elements are like this, which are shown at the top of this array elements, and given below are the addresses. 5001. So next address is 5003, 5005, etc. So this will be the storage of the array elements in this fashion. So by considering an example, we can say, let's say in this example, which dictates the pointer and array interaction, we will understand by using this example. So here I have taken an array of 5 elements, and in which the value of each element are like this, which is shown in this example. And we have taken 2 pointers named j, k, and an integer variable I. So we have assigned the pointer j the base address, that means the element of the first element, and another pointer k is also there, so which is assigned the array name A. And as you know, the array name is itself the base address of the array. So by using this ampersand A0 and A, both refer to the same thing. That means pointer J and K both are pointing to the same
address, same element. Now we are putting in a loop starting from 0 till 4, जो कि एरे की साइज के अकॉर्डिंग है। 0 से 4 तक चलेगा ये लूप, और इसमें हम ये प्रिंट कर रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटी। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ए आई स्टार ए प्लस आई स्टार आई प्लस ए और दिस आई ए, चारों ही हमारे एक ही टर्म को रिफर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हम इनको प्रिंट कर रहे हैं तो हमें चारों से एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, सेम वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा i इक्वल टू 0 के लिए, तो ये a0 स्टार a प्लस 0 स्टार i 0 प्लस a, दैट मीन्स 4 टाइम्स a0 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ से। दैट मीन्स 4 टाइम्स 7 विल बी प्रिंटेड। दोबारा से हमने सेम लूप चलाया है और हमने प्रिंट कराया है वैल्यू एंड एड्रेस। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि इनिशियली i की वैल्यू 0 है, तो हम स्टार j प्रिंट करा रहे हैं, स्टार के प्रिंट करा रहे हैं। तो j एंड k, एज यू नो, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम क्वांटिटी। तो j and k both holds the address, that means base address। तो जो एड्रेस j और k होल्ड कर रहे हैं, तो हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो स्टार j will give us the value at that address the j holds। तो स्टार j हमें प्रिंट करके दे देगा 7, और स्टार k भी 7 प्रिंट करेगा। और यहाँ पर हम एड्रेसेस प्रिंट करा रहे हैं j और k, तो हमें j और k में जो कि सेम एड्रेस प्रिंट होके आएगा। तो अब हम जब ये चारों प्रिंट हो जाएंगे, यानी टू टाइम्स द वैल्यू ऑफ a0 हियर, क्योंकि j और k में स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस है, और 2 टाइम्स एड्रेसेस, तो ये प्रिंट होके आएंगे। फिर हमने जब ये प्रिंट हो गए, तो j प्लस प्लस k प्लस प्लस मीन्स कि नाउ j इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट। जैसा कि तुम जानते हो कि जब हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, तो इट विल इंक्रीमेंट बाय 2 बाइट्स। So j will point to now a0 and k also points to a0 as j and k both are incremented। तो अब नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 होगी, तो हम स्टार j जब प्रिंट कराएंगे, तो j will be pointing to the a1 नेक्स्ट एलिमेंट। तो a1 में मतलब j is pointing to the address of a1, the next element of the array। So star j obviously gives the value at that address, which will be 2 from here। Star k also gives the same value, or j और k corresponding addresses, that means address 2 byte ahead from the previous element। तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, it will be like this: 4 times the value of each element will be printed in this way from here, और यहाँ से हमें मिलेगा वैल्यू 2 टाइम्स एंड एड्रेस 2 टाइम्स इन दिस वे। तो अब आगे चलते हैं हम, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स विल बी पॉसिबल इफ दे आर पॉइंटिंग टू द एलिमेंट ऑफ द सेम एरे। अगर एक ही एलिमेंट के, एक ही एरे के 2 एलिमेंट्स को 2 पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, तो वी कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो अब इसमें क्या है कि अगर इस तरह है कि 2 पॉइंटर्स हैं हमारे सेम एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को, या अलग अलग डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स को, 2 पॉइंटर्स टू द सेम एरे, 2 पॉइंटर्स फॉर सेम एरे, तो उसमें हम रिलेशनल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। उनको हम यानी पॉइंटर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो now they can be compared regarding their addresses
regarding their values also. तो अगर ये ptr1 एंड ptr2 दो पॉइंटर्स हैं हमारे सेम एरे के लिए, तो इस तरह का कंपेरिजन ptr1 लेस देन ptr2 इज वैलिड। अगर हमारा ptr1 पॉइंट्स टू द प्रायर एलिमेंट्स देन द ptr2, यानी ptr1 अगर हमारा पहले एरे के उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि ptr2 के पॉइंट करने से पहले अकर हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर्स। तो सी फ्रॉम दिस डायग्राम, sorry, from this program, here an array is taken with some element, two pointers j and k are there and a variable I. Now j is pointing to the element a2 and k is pointing to the element a6. तो यहाँ पर हम वैल्यू डिफरेंस प्रिंट कर रहे हैं, स्टार जे माइनस के, स्टार जे माइनस स्टार के। स्टार जे विल गिव अस द वैल्यू एट दिस एड्रेस, जो कि एड्रेस A2 का एड्रेस है 012, यानी ये वाली वैल्यू देगा हमें स्टार जे, और स्टार के देगा ये वैल्यू 9 and 34। तो बाय यूजिंग दिस स्टार जे माइनस स्टार के विल गिव अस द 9 minus 34, दैट मींस -25। अब अगर हम एड्रेसेस का डिफरेंस यहाँ लेंगे स्टार जे माइनस स्टार टू, तो यहाँ पर तो डिफरेंस हमारा ये दोबारा लिख गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ओनली वी रिक्वायर के माइनस जे, डिफरेंस इन एड्रेसेस। तो यहाँ पे हम %d करेंगे, तो डिफरेंस इन एड्रेसेस। अब के माइनस जे, अब हमें ये पोजीशन का डिफरेंस देगा, ना कि एग्जैक्ट बाइट का। मतलब कि के पॉइंटर जे पॉइंटर से जितनी पोजीशन आगे होगा, और यहाँ पर ये 4 पोजीशन आगे, तो इट विल गिव अस द डिफरेंस इन पोजीशंस, दिस विल गिव अस द डिफरेंस इन वैल्यू। तो आउटपुट विल बी लाइक दिस, value difference -25 and difference of addresses equals to 4। here 4 positions का difference है। अब हम चलते हैं array of pointers पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि array हमारा किसी भी टाइप की हो सकती है, int array, char array, float array, डबल array, लॉन्ग डबल, किसी भी टाइप की। इसी तरह एरे हमारी पॉइंटर्स की भी हो सकती है। मीनिंग ये है कि अगर हमें एक से ज्यादा पॉइंटर चाहिए, if we require more than one pointers, then we have the array of pointers. So for this we will declare the array of pointers like this, in this way। इसमें अंतर ये है कि हमने स्टार लगा दिया है, इसका मतलब इस एरे के जो 5 एलिमेंट हैं वो पांचों अपने आप में पॉइंटर्स हैं, ना कि इंटीजर वैल्यूज। तो ये जो 5 पॉइंटर होंगे वो एज यूजुअल उसी तरह होंगे, AR0, AR1, AR2, AR3 एंड AR4। These will be the 5 pointers. Now note the 5 integer values। तो अगर ये 5 पॉइंटर हैं, तो इन 5 पॉइंटर्स में हम कोई भी 5 एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स पॉइंटर्स लें, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स, ठीक है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड लाइक दिस वे, char *x10। तो ये 10 कैरेक्टर, एरे ऑफ 10 कैरेक्टर पॉइंटर्स, कैरेक्टर पॉइंटर्स की एरे हो जाएगी, और उसके जो 10 पॉइंटर होंगे वो इस तरह होंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एक प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ।
it will be like this. ये हटा दिया हमने। तो एक एरे ली हमने 5 पॉइंटर्स की यहाँ पर AR5, और दूसरी एरे BX है जिसमें 5 इंटीजर वैल्यूज हैं, और फिर हमने 5 वेरिएबल ले लिए ABCDE और एक इंटीजर वेरिएबल I ले लिया। तो अब इस एरे से देखो कि ये 5 पॉइंटर हैं AR0, AR1, AR2, AR3, AR5, 4 AR4। तो AR0 जो पॉइंटर है उसमें हमने एड्रेस डाल दिया वेरिएबल B का, AR1 में वेरिएबल A का, AR2 में वेरिएबल E का, AR3 में C और AR4 में D का। इस तरह हमने 5 एड्रेसेस ले लिए इन पांचों पॉइंटर्स में। ये जो है हमारी एरे, ये 5 पॉइंटर्स की है। फिर एक लूप चलाया तो हम प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस और वैल्यू एड्रेस। तो एड्रेस हम प्रिंट कर रहे हैं AR I की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो AR0 एड्रेस प्रिंट करेगा। तो AR0 एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ B। तो यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ B और उस एड्रेस पे वैल्यू, स्टार हमने लगा दिया तो उस एड्रेस पे वैल्यू। तो ये 5 बार चलेगा लूप और हर बार ये प्रिंट करेगा एड्रेस और वैल्यू। फिर एड्रेस वैल्यू, तो वैल्यू तो हमारी ये आएंगी कि AR0 में है B का, तो पहले B की वैल्यू आएगी, फिर A आएगा, फिर E, फिर C, फिर D। और फिर दोबारा से हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब दोबारा से लूप चला रहे हैं और असाइन कर रहे हैं कि जो 5 पॉइंटर हैं उसमें इस एरे के पांचों एलिमेंट्स का एड्रेस असाइन कर रहे हैं, BX एरे जो है। तो अब हम प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस AR0, 5 बार लूप चलेगा तो AR0, AR1, AR2 और साथ ही साथ BX0, BX1 भी प्रिंट होगा। तो एरे B की वैल्यूज प्रिंट होंगी 17, 8, 12, 74, 99 और उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ प्रिंट होंगे। तो वी कैन सी लाइक दिस। ये जो एड्रेस हैं 12, 14, 06, 10, 8, ये एट रेंडम एड्रेस आ रहे हैं इस लूप के थ्रू। तो वैल्यू तो हम जानते हैं कि AR0 में एड्रेस है B का, तो पहले B की वैल्यू आएगी, फिर A की आएगी, फिर E की आएगी, B, A, E। तो इस तरह ये वैल्यू आ रही है 25, 100, फिर आएगी तुम्हारी AR2 में है E, 82, 57, 69। ये पांचों वैल्यू आ जाएंगी और उनके एड्रेसेस। अगेन अब जो यहाँ पर आएगा इन पांचों पॉइंटर्स में दूसरी एरे B के एलिमेंट के एड्रेसेस हैं, तो ये जो एड्रेस प्रिंट होके आएंगे ये कंटिन्यूअस आएंगे, क्योंकि एरे B है, BX है, उसके पांचों एलिमेंट के एड्रेस कंटिन्यूअस आएंगे और उनकी वैल्यू जो यहाँ दी हुई है 17, 8, 12, 74, 19। So this will be the output. So by this we have completed our discussion with the array and pointers. In the next lecture we will discuss the pointers with some other entity.